अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मेला इन्फो। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे ग्लास एज फूड पैकिंग मटेरियल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पैकिंग मटेरियल ग्लास क्या होता है। ग्लास इज डिफाइंड एज एन amorphous or inorganic product of fusion that has been cooled to a rigid condition without crystallizing. For food packing, bottles or jars are the types of glass packing most often used, bottles being the primary use. In the US, 75% of all glass food containers are bottles. Glass is made primarily of silica derived from sand or sandstone. For most glass, silica is combined with other raw materials in various proportions. For example, soda lime glass, the glass typically used for food packing, contains silica 68 to 73%, limestone 10 to 13%, soda ash 12 to 15%, and aluminium mineral 1.5% to 2%. Why not glass? Plastics. Glass is inert to a wide variety of food and non-food products, very rigid and strong against pressure, transparent and non-permeable, excellent barrier properties. However, glass has a disadvantage due to its heavy weight and fragility. For food packing, the fragility has caused some safety concerns, such as the possibility of the presence of chipped glass in food products. Glass for food packing has declined over the last 3 decades, with glass losing market share to metal cans and increasingly to plastic. However, it still plays an important role in packing. Forming steps. तो इसके स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, मिक्सिंग है, मेल्टिंग है, फॉर्मिंग प्रोसेस है, वाइड माउथ प्रेस एंड ब्लो है, नैरो नेक प्रेस एंड ब्लो, एनीलिंग सरफेस ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सिंग एंड मेल्टिंग। The glass making process begins with weighing out and mixing of the raw materials and introduction of the raw materials to the glass melting furnace, which is maintained at approximately 1500 centigrade. Cullet, broken or recycled glass is also an important ingredient in glass production. In the melting furnace, the solid materials are converted to liquid, homogenized and refined. At the end of furnace, a lump of molten glass called a gobe is transformed to the glass forming process. Gobe का जी, gobe loading into the blank mold, buffle down and start of plunger up and pressing finished person produced. उसके बाद है जी बफल अप ब्लैंक मोल्ड ओपन एंड पैरिजन इनवर्ट टू ब्लो इनसाइड, नेक रिंग ओपन एंड रिवर्ट टू ब्लैक साइड, पैरिजन केप्ट इन ब्लो मोल्ड फॉर रीहीटिंग। नेक्स्ट स्टेप है जी ब्लो हेड डाउन एंड फाइनल ब्लो कंटेनर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट है जी टेक आउट ऑफ प्रोड्यूस कंटेनर। फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है जी? फॉर फूड पैकिंग ग्लास कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग blow and blow process, wide mouth press and blow process, narrow neck process, and press and blow process. Blow and blow process. In the blow and blow process, compressed air blows the gobe into the blank mold of the forming machine and creates the shape of the parison. Then the completed parison is transformed into the blow mold, where air blows the parison to form a final shape. ये जी गोप है, लोडिंग इनटू द ब्लैंक मोल्ड है, बफल डाउन एंड स्टार्ट ऑफ प्लंगर अप है, प्लंगर अप एंड प्रेसिंग फिनिश पैरिजन प्रोड्यूस्ड है। उसके बाद बैक ब्लैंक साइड है और वो ब्लो साइड में जा रहा है, ठीक है। बफल अप ब्लैंक मोल्ड ओपन एंड पैरिजन इनवर्ट टू ब्लो साइड। नेक्स्ट है जी नेक रिंग ओपन एंड रिवर्ट टू ब्लैंक साइड है, पैरिजन केप्ट इन ब्लो मोल्ड फॉर रीहीटिंग है। Then the blow head down and final blow container is formed. Take out of the produce container. Wide mouth press and blow process. In the wide mouth process and blow process, metal plunger is used to form the gobe into the parison shape instead of using air blowing. As in the blow and blow process, the compressed air blows the container into its final shape. The press and blow process provides increased productivity, less weight, and more uniform wall thickness compared to the blow and blow process. Press and blow, the blow method.
First LG step go dropped into blank mode. Second है plunger presses blank shape. ठीक है, third है जी blank pressed. Fourth blank shape. Fifth में जी blank transfer to blow mold. Sixth में जी final shape blown. Seven में furnished jar. Arrow neck press and blow process. In the narrow neck press and blow process, the overall process similar to the wide mouth process, but a much smaller metal plunger is used to make the Parisian shape. Beer or beverage bottles are commonly applications for the narrow neck press and blow process. Less than 38 mm of finished diameter is regarded as narrow mouth, and over 38 mm is called wide mouth. ग्लास पेकिंग इंस्टीट्यूट 2012. इसका जो प्रोसेस है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में वीडियो में करेंगे। अब तक की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।